अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारा नाम है पंजाबी लीग और हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं हमारे तीसरे पॉडकास्ट पे। आज हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे हल्के फुल्के अंदाज के अंदर उन इश्यूज और टॉपिक्स के बारे में जो सामना कर रहे हैं पंजाब और पंजाबियों का। हमारे साथ हैं हमारे दो साथी, इंशाल्लाह आपको बताएंगे हम किस टॉपिक से ऊपर आज बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू होगा बेसिकली कि जो मिसकंसेप्शंस है पंजाब और पंजाबी ज़बान और सकाफत के बारे में, उनको जवाब दिया जाए जो काफ़ी यानी स्प्रेड है पाकिस्तान में और बाकायदा इलाकों में। बेसिकली जो Assalamualaikum. Don't go over me. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yep, we're going to be talking about Punjabi misconceptions today, or misconceptions people have about Punjabi people or Punjabi culture. we'll talk about the ones that we have in our minds right now, and I'm pretty sure जैसे हम और करेंगे और भी जो misconceptions होती हैं और जो खराब ये चीजें हैं पंजाबी के बारे में उनको भी हम ठीक कर देंगे. So first, who wants to go and talk about it? Okay, I'll actually start off. I'll start off with this. So one really big misconception that I've heard about Punjabi language in particular is that it has a tendency to be rude, right? And this is actually a stereotype that I've gotten from my parents as well, right? So my mom in particular doesn't have anything against Punjabi, right? But she has something against one particular thing, and that's like, you know how like in Urdu you say like aap kaise ho, right? जी. The way to say that is like how what's the equivalent? Like she has with like the tu, yeah, tahara ki hala, like that's viewed as rude. Or yeah, tusi, yeah. So these, it's like viewed as rude, right? So I told I was talking to my mom about this, and she's like, no, I really don't like when people say this in Punjabi. But I'm like, yo, this is such like an essential Punjabi word, right? Because it's your way of referring to someone. So I feel like this is one really big misconception where people are like, yo, this is offensive, right? And it's kind of weird because it's like, this is just one language's way of referring to someone else. How could that be offensive, right? So I think this is a really big misconception. This particular phrase in particular, this particular way of referring to someone, but also generally speaking, I think in other Punjabi phrases as well, people see them as rude, and it's not rude. It's just you know what I mean? It's just a way to refer to someone. So I think that's add to this for a little bit. मेरे ख्याल से कि लोगों को ये रूड या वल्गर खाली इसलिए लगता है क्योंकि वो कंपेयर एक जुबान को दूसरी जुबान से कर रहे हैं जो इज कम्प्लीटली रॉन्ग. वो उर्दू के साथ कंपेयर कर रहे हैं. सही है ना? जैसे अंग्रेजी के अंदर आप का कोई देयर इज नो आप इन इंग्लिश, यू नो आई एम सेइंग, कोई तस्वीर नहीं है. एवरीबॉडी सेज यू. यहाँ 70 साल का है, यहाँ छोटा बच्चा, यू कहते हैं सारे, यू नो. जी. सो इन उर्दू दे हैव आप, तुम, तू. पंजाबी के अंदर भी तुसी होता है usually when you have to say somebody nice, and it's completely normal. ये खाली problem मेरे ख्याल से तब आती है क्योंकि it goes back to the same thing we were talking about earlier, right? That Urdu क्या कहते हैं उसको, influence, Urdu influence on the culture, you know what I'm saying? There's nothing wrong with the word in Punjabi, लेकिन ये जब compare किया जाता है फिर खराब है क्योंकि आप जुबान को कैसे compare कर सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल सही बात की है. मेरे समझ में जो लफ्ज तोहाडा और तुसी है, ये आप यानी से इक्विवेलेंट है पंजाबी में. तू है जो उर्दू में भी तू है, ठीक है, समझाती है, वो डिसरिस्पेक्टफुल है, सही है. लेकिन जो तोहाडा है और तुसी बड़े यानी फॉर्मल लफ्ज हैं ये. तो मुझे नहीं पता कि लोग तोहाडा और तुसी भी समझते थे कि ये भी रूड है. तो ये भी दिस इज न्यूज़ टू मी. लेकिन हाँ, मेरे भी एक सिमिलर वाकया हुआ कि किसी ने कहा था कि वो पंजाबी से कोई कुछ खिलाफ नहीं पंजाबी के, वो खुद पंजाबी हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि लेकिन उन्होंने माना कि हाँ, जब कभी कभार पंजाबी थोड़े से रूड होते हैं तलफ़ुज़ में या लहजे में. लेकिन मैंने कहा कि किसने क्या रूड होते हैं. जैसे फिर उन्होंने कहा कि जैसे कोई यू नो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं पंजाबी के, जो वोकैबुलरी वो इस्तेमाल करती है वो. मैंने कहा तो ये तो बस लफ्ज है पंजाबी में, किसने बताया कि ये रूड है. फिर मैंने वो यानी क्लियर किया कि ये जो उर्दू है, उर्दू स्पीकर्स या जो उर्दू मीडिया है,
इन्होंने या किताबें इन्होंने सिखाया कि आपकी ज़बान जो पंजाबी है वो कम ज़बान है, कि ये रूट ज़बान है, ठीक है, इसमें मुहज़्ज़ब किस्म की गुफ्तगू नहीं कर सकते, उन्होंने सिखाया है। और आप मान गए ये कैसे? तो फिर वो भी थोड़े से यानी उनको समझ आ गई थी, लेकिन ये कि नहीं कहने की चीज़ है। You know, that's facts, but also the point you were touching on earlier where you're comparing the languages, I think that's the essence of the problem. Because when you speak English, there's no other language you're comparing it to. You know what I mean? Like you're just speaking English. But what you were saying earlier is facts because it's like, yo, Punjabi is always going to be compared to Urdu. Punjabi will always be viewed, I mean, I guess because it's like the lingua franca, right? Like Urdu is like just a common language between all the people in Pakistan. It's always going to be viewed in relation to Urdu. So I think that's at the heart of the problem. Yeah, I didn't realize that. I did not realize and that. this could be completely opposite too, because अगर पंजाबी की एक लहर चल जाए वहाँ पे, hey, इंशाल्लाह, और सारे पंजाबी बोलने लग जाए, तो उसको फिर उर्दू से कंपेयर किया जाएगा. Nobody can think of it now, but we can if you see the vision, right? अगर हम देखें कि ये मूवमेंट चल जाए, रिफॉर्मेशन हो, वहाँ पे लोग अपनी पंजाबी को एक्सेप्ट करें, उसको कबूल करें, और फिर जब पूरी फैमिली पंजाबी वहाँ पे बोल रही होगी, एक बच्चा भी उर्दू में बोलने लग जाएगा, he will be rude. You understand? बिल्कुल उल्टा भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन पंजाबियों को इतना तसव्वुर नहीं है, इतना यानी उनका दिमाग वसी नहीं होता कि वो समझ सकें, ऐसे ये हो सकता है. ये होता है मेरे साथ भी. जब आप जाओ ना, like जिधर होते हैं, like the people who are from families who only speak Punjabi, like they come from like those families which don't really speak Urdu, right? वो खाली पंजाबी बोलते हैं, और like जो हमारे थोड़े शहरों से बाहर रहते हैं लोग, right? उनके सामने जो आप उर्दू बोलने लग जाओगे, वो बड़ा अजीब समझेंगे आपको, be like, yo, पंजाबी उर्दू क्यों बोल रहे हैं, you know what I'm saying? And then you have to go back in, then you're like, yo, it's me who's wrong, because all that freaking programming of speaking Urdu and whatnot, then it's like that. So it does exist, the opposite too. लेकिन जो urban centers है, जो the mainstream है, वहाँ पे इसको दिखाया जाता है कि थोड़ी vulgar और थोड़ी rude language है. And it's not just those few phrases, right? It goes even beyond that. बिल्कुल. क्योंकि and in one scenario it's actually more endearing, right? जो आपके बुजुर्ग हैं या कोई और है, अगर आप उनको पंजाबी में कहो like ताड़ा की हाल है, तुसी की कर रहे हो, it should be more endearing to them than saying like he's talking to me in the mother tongue maa boli, instead of being rude. You understand what I'm saying? बिल्कुल. Okay. I think we spent a lot of time talking about language, and we don't want. There's one more thing too. Yeah. Because this goes further just beyond a couple of phrases. I was gonna say, उस पंजाबी को widely mainstream कर दिखाया जाता है कि जैसे लतीफों वाली जुबान है और गालम गलोच वाली और स्ट्रीट की जुबान है, right? This is a very big misconception. वहाँ पे तो कोई intellectual पंजाबी सुनता ही नहीं, ना कोई बोलता है, and there's not that many poetry recitations जिधर पंजाबी की पोइट्री हो रही है, क्योंकि उर्दू की हर जगह होती है, स्कूलों के अंदर उसको सिखाया जाता है हाई लेवल पे पोइट्री का, and then you have like Alam Iqbal's poetry throughout, right? And there's a respect for that. Now if they start promoting like Baba Bulle Shah's poetry, और वो गानों के अंदर और क्या कहते हैं कवालियों के अंदर होती है, लेकिन उसको नजरअंदाज किया जाता है, और you have इतने हमारे भरे भरे पोइट्स गुजरे, and these Sufis, right? Baba Farid, Mian Muhammad Baksh, you have Waris Shah, Bulle Shah, so many. अगर उनकी पंजाबी दिखाई जाए, it's completely not vulgar. But the one that you hear on the street or the one that's portrayed, then they have a point. That was just my little. बिल्कुल. लेकिन ये जाहिर सी बात है कि अगर सड़कों पे जाएंगे, जो लेवल है ज़बान का वो मुख्तलिफ होगा. रजिस्टर कहते हैं अंग्रेजी में, रजिस्टर ऑफ लैंग्वेज. डिफरेंट मकाम पे मुख्तलिफ किस्म की आप गुफ्तगू करते हैं. स्ट्रीटों में, सड़कों में कुछ और होगा, स्कूल में कुछ और होगा, घर में कुछ और होगा. And also like, come on man, you're not gonna fool us, you know what I'm saying? सारी स्पॉटलाइट आप पंजाबी के ऊपर ना डालो. आप कहीं भी चले जाओ ना, उर्दू के अंदर भी वो बातें कर रहे होते हैं उसी अंदाज के अंदर. Like don't put the spotlight on Punjabi and try to say that we talk. वही अंदाज. Yeah. वो लेकिन ऐसे दिखाना चाहते हैं जिस तरह हर जो उर्दू बोलते हैं ना, अलामा इकबाल की शायरी जैसे बोल रहा है. नहीं, ऐसे नहीं होता. No.
They speak so terribly, especially nowadays. Terribly. उर्दू सही तरह आती भी नहीं उनको आजकल कि जो उर्दू बोलते हैं. और खासकर ये जो बॉलीवुड का सारा इन्फ्लुएंस है, तलफ़ुज़ भी खराब करी जा रहे हैं. हाँ. Even हमारे अपने पाकिस्तानी, it's surprising in our own lifetime. You know, we used to make fun of the Indians, right? वो फिर को फिर कहते हैं. हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर भी वही हो रहा है. And they say it so openly. Be like, I'm like, yo, did you hear what you said, man? So, anyways, that's one thing. What's up next? We appreciate the jazba. We appreciate the jazba. Okay, let's move on to a little bit of a light-hearted one. I have another one. Okay, there's another stereotype I've encountered. Maybe not too much, but I feel like it's enough to warrant like I feel like you guys will know it too. So I've heard one stereotype about Punjabis or misconception is that we're really arrogant and that we're really like, you know, I'm Punjabi, I'm better, I'm this, I'm that. And this is something I haven't experienced in that like I haven't seen Punjabis act like that, but I've heard people saying that about Punjabis, which I don't think is true. What do you guys think about that? मेरे ख्याल से हाँ, जैसे आपने कहा कि आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, मैंने उल्टा एक्सपीरियंस किया है, ठीक है, हमेशा. ये शायद होगा, पता नहीं, मैंने भी सुना हुआ है लेकिन मैंने कभी देखा नहीं कि कोई पंजाबी क्या वो मैं पंजाबी हूं, मैं वो, मैंने हमेशा उल्टा देखा हुआ है. लेकिन I can drop my 2 cents on this. होंगे लोग शायद जो खास जो जात पे बहुत जोर देते हैं, जो कबीले पे बहुत जोर देते हैं, शायद वो होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता. मेरे ख्याल से और मेरे नजदीक जो मैंने देखा हुआ है और इवन जो ऑनलाइन देखा है, इन पर्सन देखा है, what you said in your statement is that you never encountered it but you heard people say it. That's what you said, right? Yep. And this is exactly the other people who are not Punjabi say this about Punjabis 90% of the time. So you know, arrogant log har qawm ke andar hote hain, that's without a doubt. But mostly if you look at the facts, right, जो हकीकत है जमीन के ऊपर, पंजाब के अंदर हर कौम रह रही है वहां पे, और हर एक कहते हैं कि पंजाबी खुले दिल के लोग हैं, वड्डे दिल दे लोग किए गए ने, and they love their guests, they treat their guests nicely, right? This is the real thing about Punjabis. We are open-hearted. You don't hear that about the others. You know, I'm not going to say anything about the others. We're just clearing the misconceptions about Punjabis, which are us, right? They love to portray this and tack it on to the other ones, right? Like to the vulgar language, and then they're too arrogant. हम कैसे arrogant हैं? अपनी जुबान तो हम नहीं बोलते, आपकी हम तारीफ करते रहते हैं. हमारे जो पंजाबी लोग हैं दूसरों की तारीफें करी जाते हैं यार, उनको भाई कहते हैं, उनको मैंने उल्टा देखा है हमेशा. मैं वही कह रहा हूं ना, और उल्टा यानी हम्बल नहीं, लेकिन हम्बल से भी ज्यादा, यानी एक हम्बल चीज होती है, फिर एक अपने आप को कुछ समझना नहीं, कुछ अपने शनाख्त को. वो one thing is pride, another thing is arrogance, right? जिसको तकब्बुर कहते हैं. There's no takabbur in Punjab, and there's not even any that much pride left in there. So you know, hopefully we're trying to revive that. There should be pride, and I'll say it, you know what I'm saying? Like, some people might not like the fact, and they might be Punjabi who's listening, right? And that's because वो इतनी programming strong है कि अपनी पंजाबी तो accept करने को लोग कहते हैं कि नहीं यार ये सही नहीं है, हम सबको accept करते हैं. You have to accept yourself first and respect yourself first before you can respect others. And, I mean, the whole point of the Punjabi League, that we are unapologetic on our own podcast. We're not going to be कोई माफी मांगने नहीं आए. ना, बिल्कुल नहीं. And this is how it should be. क्योंकि दूसरे लोग तो they're सरेआम बोलते हैं rooftop who they are, and they think they're better than everybody. So we're not saying we're better. We're all brothers in Pakistan. Let's keep it that way, and we will be treated equally. इंशाल्लाह. और जिस तरह आपने कहा था, मैंने एक वजाहत करनी थी कि क्या कहा था आपने कि हाँ, जो पंजाबी कोई होंगे जो उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा, उनको कह रहे हैं नहीं हम पाकिस्तानी हैं, हम सब भाई हैं, वो हाँ. लेकिन जिस तरह जो ऐसे पंजाबी होते हैं मजमूई तौर पे वो बहुत पाकिस्तान पे बहुत फख्र करते हैं और अपने पाकिस्तानी होने पे, तो
अगर कोई अपने पंजाबियत पे ऐसे करता है और अपने पाकिस्तानियत पे ऐसे करता है, कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, कोई फर्क नहीं है। तो मैंने देखा है जो बहुत यानी फख्र करते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तानियत पे, वो कहेंगे नहीं फख्र बुरी चीज है, पंजाबी पे फख्र नहीं कर सकते, लेकिन पाकिस्तानियत पे फख्र करते हैं। जो एक ही चीज है, नेशनलिज्म, जो मैं कहता हूँ जरूरी है, जाहिर है जरूरी है, नेशनलिज्म जरूरी है, एक कौमी गैरत और प्राइड फख्र जरूरी है जिंदा रहने के लिए, लेकिन तकब्बुर में नहीं मुंतकिल होना चाहिए। बिल्कुल। एंड द फैक्ट ऑफ द मैटर इज राइट, अल्लाह ताला ने हमें और आपको पंजाबी बनाया है, इस चीज के ऊपर तो आप फख्र कर सकते हो, और मुसलमान बनाया है और पाकिस्तानी बनाया है, तो खाली पाकिस्तानी बना के नहीं छोड़ दिया, तो ये शनाख्त आपको बाय बर्थ मिली है, इसके ऊपर you have to protect it. Or if you think, I think one more misconception there is, right? Or might be the anti-misconception, is actually like, it's basically what you guys were saying earlier, like the Punjabis want too much, right? Or they have too much. That's what everybody complains in Pakistan, के हर चीज पंजाबी कंट्रोल कर रहे हैं, उनके पास बहुत ज्यादा है, उनसे तोड़ना पड़ेगा। सूबे बनाओ जी, हर एक कहता है कि पंजाब को तोड़ो, बाकी 3-4 और भी बीच में वो लाइनें मार देते हैं, लेकिन असली कहते हैं कि पंजाब के माइक्रोसॉफ्ट टुकड़े करने हैं, माइक्रोसॉफ्ट पेंट खानदान। And that we talked about this earlier too in the last podcast, that everybody out there, they're very proficient in Microsoft Paint, you know. तस्वीर पाकिस्तान की लेके आए थे मैप की, उसके अंदर अपनी लाइनें बनाने लग जाते हैं। You know what I'm saying? Yeah. So I wanted to ask another, or bring up another misconception, which is on the point of shanacht, what we talked about recently, and that is similar to what we just talked about, the arrogance thing, but it's more towards, and this is another thing I've heard, that Punjabis are too tribalistic, and that our tribalism is kind of like the caste system in India, kind of. This is also what I've heard, that we're really tribalistic. Not as tribalistic, I guess, as stereotype as the Pathans, but like we are pretty tribalistic. That's what I've heard. What would you guys say about that? Yeah, I don't think we're as tribalistic as the other ones. Yeah, I would agree with that, but I've definitely heard that before. Like our different like. लेकिन कास्ट की तरह नहीं है. Yeah, कास्ट पाकिस्तान में वो लफ्ज इस्तेमाल होता है, लेकिन उनको वो समझते नहीं कि कास्ट क्या है असल में. हमारे कबीले हैं, ठीक है, जात क्या नहीं, कबीले, जात भी मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, मैं कबीले लफ्ज इस्तेमाल करता. कास्ट एक मुख्तलिफ सी चीज है जो इंडिया में देखो ऐसी कास्ट होती है. हमारे पंजाब में कभी ऐसे कास्ट है, कबायली तौर पे हम लोग रहते हैं, या रहते थे, अभी भी रहते हैं. More tribal than a caste system. More tribal. Like it's more so divided into like people groups, like different people groups with the same ethnicity. Yeah. और आप ऊपर नीचे जा सकते हैं मुआशरे में, या इस तरह के आप जो पैदा हुए हैं वही होना है, तो वो कास्ट से बिल्कुल है. Okay. लेकिन हाँ, मैंने ये कहनी थी ट्राइबलिज्म के बारे में, कि जो पंजाबी हैं अपने जो एक पंजाबी कौमियत पे वो इतना नहीं करते जितना अपने कबीले पे करते हैं. मैं जट हूँ, मैं अराई हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं अवान हूँ, ये इसमें बहुत यानी दिल लगा के करते हैं. लेकिन जो पंजाब की बात आती है और पंजाबियत की बात आती है, इसमें वो हल्के पड़ जाते हैं. मुझे समझ नहीं आती क्यों. Yeah, that's a very good point. That's a very good point. जो अपना उनका है ना, जैसे आपने क्या है, वो मैं राजपूत हूँ, मैं अराई हूँ, मैं अवान हूँ, जट हूँ मैं, उसके ऊपर तो फुल जोर और शोर है. You know what I'm saying? वो कहते हैं ना कि वो like full pride they have in that, but not as a totality of the Punjabiness. You know what I'm saying? Yeah, that's true. That's true. As the language and culture comes under attack, people are coming together. You know what I'm saying? लेकिन हम इकट्ठे हो रहे हैं, बिल्कुल. ये हम एक क्रिस्टलाइजेशन फेज में से गुजर रहे हैं, जिसका मजमूई तौर पे सारी दूसरी कौमें ने वो इस फेज से गुजर चुके हैं, अपने एक कबायली जहन से निकल के एक कौमी जहनियत में आ गए थे. अभी हम उस से गुजर रहे हैं, अभी हुई नहीं मुकम्मली तौर पे, लेकिन वो गुजर रहे हैं हम अभी. Inshallah. I think another big one, I'll go on it, is which is very it's nothing wrong with it,
But it's sad for the Muslim Punjabis in Pakistan, which is the majority of Punjab, right? क्या आप जब भी especially online के अंदर ये बहुत prevalent है, even पूरी दुनिया के अंदर भी, जब कोई पंजाबी कहता है, वो automatically इंडिया के सिख उसकी ज़हन में आते हैं. You know? Which is, I don't know when that happened, when the Muslims gave away the Punjabi to them, you know what I'm saying? But we need to get that back. We need to get our portion back, you know what I'm saying? I mean, I'm gonna add something here. I don't think it's a matter of taking it back because we're both Punjabi, right? I was joking. Yeah, but I get what you're saying. Yeah, for sure. I mean, listen, at the end of the day, there are more Muslim Punjabis and Sikh Punjabis, but we're both Punjabis. We're brothers in Punjabiyat, right? Yeah, but the misconception is big there. They automatically mix them up together, Punjabi and they equate it to Sikh, you know? Yeah, hold on. Let me look up Punjabi in Google real quick. वो सारे इंडिया दे सिख खांदे ने. सारे Sikh. Hey, you see, there's nothing wrong with that, right? There's nothing wrong with that, man. They're proud of it. जोरदार अपना crystallization किया हुआ है. Yeah, mashallah, that's awesome. उन्होंने वो जो सिख हैं, वो अपने पंजाबी शनाख्त पे crystallization phase से गुजर चुके हैं. हम जो मुसलमान पंजाबी हैं, हमने भी गुजरना है. हम अभी गुजर रहे हैं. Yep. Inshallah. We went through the discrystallization phase, you know what I'm saying? Decrystallization. Yeah, that's what we went through. So let's just say we crystallized in something else. Yeah, in Urdu, exactly. जितनी majority है ना, उतनी representation होनी चाहिए, and that's just a fair thing. Yeah. बिल्कुल, हम majority पंजाब के और जो जाहिर है, लेकिन हम कोई अगर पाकिस्तान पंजाब भी टाइप करते गूगल में, फिर भी वो पहले 3 पाकिस्तान के होंगे, फिर बाकी वो इंडिया के होंगे. हमारी कोई representation दुनिया में नहीं है. पाकिस्तान में नहीं है तो दुनिया में कैसे होगी? पाकिस्तान में खुद नहीं है. ठीक है? Yeah. Actually, you know when you're in the West and you kind of go through like an identity crisis, I guess, right? When I was going through that, and like you're Punjabi, right? But you don't know you're Punjabi. I was always like, yo, can Muslims, like Pakistani Punjabi, like are they really Punjabi? Like that would always go through my mind because you just see so many Sikhs as Punjabis, which is cool. Like there's nothing wrong with that. But like it's just we have such an underrepresentation of like Pakistani Punjabis. और जो सिख होते हैं वो इजहार करते हैं अपने पंजाबी के. It's just not associated the same way. It's weird. All right, I think I'll go through one more misconception. Mm-hmm. That Punjabis are very loud and very vocal people, but यार जोरों शोर वाले लोग हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. With this one, my man. मैं deny नहीं करता. मैं deny नहीं करता. This is truth. Has a grain of truth, man. So this one has some truth in it. ये इसमें है सच्चाई कोई. यार कोई ना कोई तो होना चाहिए ना जो जोरों शोर के अंदर हो. Yeah, we're the life of the party, man. Alhamdulillah. There you go. Present that. Yo, tell me any desi party, वो party नहीं होगी जब तक पंजाबी गाना नहीं लगेगा वहाँ पे. Big facts. Yeah. Alhamdulillah. Okay, I want to go through another misconception. This is really controversial. Sure. Okay, really controversial. And this is specifically towards one group of people. That Lahori Punjabis put donkey meat in the biryani. Is this true? I'm not Lahori, so you guys gotta tell me, right? Oh, this is the controversial part. I don't know about that, man. There was news that एक news निकली थी कि वो कोई है वो गधे का जो मरे गधे हैं उनका गोश्त बेच रहे हैं. ये तो इलीगल काम है. सबसे पहले गैर कानूनी काम है, और प्लस आप अपने मुसलमानों के साथ धोखा कर रहे हो, हराम उनको खिला रहे हो. और दूसरा ये तो खाली मेरे ख्याल से मनफी उनका मोटिव था, just to make money, you know what I'm saying, और पकड़े गए थे मेरे ख्याल से वो लोग जो हैं. So there's no truth to that. और जिन्होंने I hope किसी ने ना खाया, और जिन्होंने खा भी लिया हो वो जान के कभी नहीं खाएंगे हमारे लोग. Never. बिल्कुल नहीं. वो मिक्स करते ना. पता कितनी मिलावट हो गई पाकिस्तान में. सिर्फ दौड़ में नहीं, हर जगह. दूध भी सही दूध नहीं होता आजकल. मैंने सुना हुआ है. तो बहुत मिलावटें हो चुकी हैं. और ये होता है जब क्या कि निजाम का क्या कहें तो जो लोग. And that's a very acute misconception, because the brother said that Lahori Punjabis eat that. That means
ये किसने कहा हुआ है? Misconception कहाँ से आई होगी? There's somebody who doesn't like Lahoris in the first place. So I'm just pointing it out. It's a very, very acute misconception. Listen, man. That's a Lahori problem, bro. That's a Lahori problem. I'll leave it to y'all, all right? Oh man. Okay, I got another one for you guys. Okay, the other one is that Punjabis, and this is kind of on the last one as well, and we'll end with this, is that Punjabis are too aggressive. I don't know if you guys have heard this one. This is also one of those के आप किससे compare कर रहे हो? Aggression. Just generally. That we're aggressive. I guess this goes on kind of like the loud and boisterous. That we have a tendency to be like very kind of aggressive and maybe overbearing. Overbearing is a better word, I would say. Overbearing. I think ये खाली उनके लिए होगा जो लोग मिलन जुलन जिनका इतना close नहीं होता. Because Punjabis have like we're affectionate and compassionate people. That's the right words to say, you know what I'm saying? Yeah. थोड़ी साबुत होता है. You know, बातचीत हो रही है. You're with the guy. उसने कोई चीज की है. वो ठा के पीछे लगता है, you know. बंदा ही हिल जाता है. A normal the guy who's not Punjabi, वो तो बेचारा गिर जाएगा, उसको एक दो थप्पे लगेंगे, you know what I'm saying? And that's just jokes, you know. ये सही बात है कि जब बस आप दोस्त आपस में बात करें ऐसे मारते हैं. Yo, come on, that's how we do it. Yeah. एक दो थप्पड़, it's out of love. You know, also that's just like an alpha culture, you know what I'm saying? I'll put it out there. और ये actually funny बात है, ये जितने हमने misconceptions किए, I just thought about it. हम इनको आपस में भी देख सकते हैं कि जो दूसरे cultures पाकिस्तान के अंदर है वो कैसे हैं. So you know, बिल्कुल. आज तो खाली हम पंजाबी misconceptions की बात कर रहे हैं. And what about this one? It's like not controversial at all, so we don't need to end at a high point. Punjabis love to show off. What you guys take on that? That would be showcase. होगा. Yeah, I mean, I think that's the whole Pakistani thing. I think it's a Pakistani. नहीं पता क्या है ये जो मिस्टर ये दोनों पाकिस्तान और इंडिया के हैं जो. It's true though, Punjabis do love to show off. Yeah, I'm gonna say I'm gonna agree with you on this one. I would say there's some truth to this. I would say that showcase for a little bit. You know, we like to show off a little. No doubt about it. Obviously, people will differ, right? But yeah, I would say there's a grain of truth to that. Yeah. So today we're trying to keep it light. Halki fulki conversation हमने रखी थी. I think that should be. If there's more misconceptions, अगर कोई और चीजें हैं जो आप लोगों को पता है, please हमसे share करें. अपनी opinion बताएं हमें. Do you agree with us? Do you disagree with us? We'd love to hear from you guys. Of course. And we wanted to keep this episode lighthearted, guys. We wanted to keep it chill, you know what I'm saying? Because, listen, man, and the serious topics that we're going to be discussing in the future, inshallah, we're going to need some laughs to get to that, you know what I'm saying? Yeah. तो इंशाल्लाह हमारे ट्विटर पे भी जाइए, वहाँ पे मज़ीद मालूमात हैं और हमारे लिंक में होगा. तो इंशाल्लाह इसके साथ हम ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को. इंशाल्लाह फिर अगली दफ़ा मिलेंगे. Inshallah. Alrighty, guys, let's do the nada. Jeev Punjab. Alrighty, assalamu alaikum, everyone. Wa alaikum assalam.